Good morning, students. Today we will discuss the structure and function of another cell organelles, mitochondria. Like as the different cell organelles present inside the cell perform the specific function. Similarly, mitochondria is another important cell organelles play an important role inside the cell. First of all, see the structure of mitochondria. The structure drawn on the blackboard. We see the structure of mitochondria: outer membrane, inner membrane, cristae, and mitochondrial matrix. Inside the mitochondria have own DNA. Then we can say the mitochondria have the ability to form a new mitochondria inside the cell. And the important role of cristae are the folded structure seen inside the mitochondria. The cristae have the ability to expand the oxidative surface inside the mitochondria. Then in other words we can say the cristae are the major site of the oxidation inside the mitochondria. Cristae are also helpful in the oxidation of glucose and release energy in the form of ATP and also release carbon dioxide and water. In this way, the released energy in the form of ATP is finally stored inside the mitochondria. Then, the mitochondria are popularly known as the powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, जिसको हमने अभी बताया है, इसमें मेन रोल है क्रिस्टी का, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जो ऑक्सीडेशन में अपना रोल प्ले करता है, जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, फैट और अनदर फ्यूल्स, they have the ability to produce energy in the form of ATP consumed inside the mitochondria. And mitochondria, the main role of mitochondria inside the cell are to generate ATP for the breakdown of glucose, fat and carbohydrate and other fuels. In the presence of O2, breakdown of complex molecule into simpler molecule inside the mitochondria. This process are also called catabolism. Complex word or metabolism. Metabolism are formed with two words, catabolism and anabolism. In catabolism, the complex substance converted into simpler form, and in anabolism, the monomers or small particle are made together form a complex compound, and both are combinedly called metabolism. हिंदी में कहते हैं उपापचय. मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचय, एनाबॉलिज्म मीन्स उपचय, कैटाबॉलिज्म मीन्स अपचय. ये इसकी हिंदी है. All the oxidative mechanism being done inside the mitochondria in the presence of oxygen. Inside the cell, mitochondria were first
discovered or seen by Altman and Kolliker and give the name of the mitochondria or bioplast. And finally, Carl Benda give the name of that particular organelle present inside the cell are mitochondria. Mitochondria play an important role inside the cell, and all the cellular function based on mitochondria. If a mitochondria check the function inside the cell, then all another function of cell will also check. We all know any type of function being done by another organelles with the help of energy, and mitochondria have the ability to produce energy in the presence of oxygen due to consumption of carbohydrate, fat and other energy producing fuels present inside the cell. Then the mitochondria are not able to produce energy inside the cell. Then another organelles have not obtained the energy. Then those organelles check the function inside the cell. कहने का मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन बंद कर देता है, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट या अदर जो फ्यूल हैं जो एनर्जी के प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, अगर उसका कंजम्पशन बंद हो जाए, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चेक हो जाए, एनर्जी का लिबरेशन बंद हो जाए, तो बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर उनको न एनर्जी मिलेगी, न वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, और इस तरह से हम देखेंगे कि वह सेल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. In this way we can say mitochondria have the ability to provide energy to the cell organelles present inside the cell, and the mitochondria have the ability to provide the energy to another cell or neighbor cells, and those neighbor cells with the help of the energy provided by the mitochondria done all the activity inside our body, and also helpful in the increase the number of cell in our body. हमारे बॉडी के अंदर सेल के नंबर को इंक्रीज करने में भी यह मददगार होते हैं, क्योंकि जब तक मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर नहीं होगी, जब तक सेल को पोषण नहीं मिलेगा, तब तक आगे सेल में सेल का डिवीजन भी पॉसिबल नहीं होगा. इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का रोल अहम हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने इस रोल के कारण ही सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स के रूप में जाना जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी will already discuss the another cell organelles and their function like lysosome. Thank you.